We have discussed some of the market ratios where we have seen that to calculate these ratios, we need some information or some data from the financial statements, and we also need some information from the market. Another very important ratio is the book value. Although we do not require data to calculate book value from the market, but its relevance is that market price or the market value is very much related to this. यानी बुक वैल्यू का मार्केट प्राइस के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है. बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? बुक वैल्यू असल में हमें ये बताती है कि एक शेयर जो एक कंपनी ने इशू किया है उसके अगेंस्ट उस कंपनी के पास कितनी अमाउंट के एसेट्स मौजूद हैं. These assets may not be in the form of cash, and rather actually these assets are never in the form of cash, but the value of assets is reflected in the book value. For example, if the book value is, let's say, rupees 50, this simply means that the company has got assets worth rupees 50 against each share issued. So we may assume that in case of liquidation, अगर कंपनी बंद हो जाए तो वो कंपनी अपने हर शेयर होल्डर को 50 रुपीस पे कर सकती है. How it is related to the market price? Market price एक्चुअली बहुत सी चीज़ों का मजमुआ होती है. यानी हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक वजह है जो मार्केट प्राइस को डिटरमिन करती है. There are many forces of demand and supply which actually keep the value higher or lower. लेकिन the basis, the very foundation of market value or the market price is the book value. यानी जब हम ये कहते हैं कि एक शेयर के अगेंस्ट एक कंपनी के पास 50 रुपीस के एसेट्स हैं, then the share should be sold in the market for rupees 50 or somewhere about rupees 50. To calculate this book value, we need to know what is the shareholders' equity. Shareholders' equity के बारे में हम पढ़ चुके हैं. यानी ये वो शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स और रिजर्व्स का मजमुआ है जिसको कलेक्टिवली हम शेयर होल्डर्स equity का नाम देते हैं. And we also need to know that how much is the number of outstanding shares. Outstanding shares वो हैं कि जो कंपनी ने इशू किए हैं और वो लोगों के पास यानी जनरल पब्लिक के पास मौजूद हैं. ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स एक दफ़ा इशू करने के बाद कंपनी इनको वापस खरीद सकती है. यानी कैंसिल नहीं कर सकती, रिडीम नहीं कर सकती, बल्कि इनको वापस खरीद सकती है. ऐसे शेयर्स जिनको कंपनी खुद इशू करने के बाद दोबारा खरीद लेती है और अपने पास होल्ड करती है, उसको हम ट्रेजरी स्टॉक का नाम देते हैं. आइए देखते हैं कि बुक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. So the formula for calculating book value is shareholders equity divided by the number of outstanding shares. यहाँ ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक कंपनी ने 1,00,000 शेयर्स इशू किए हैं और उसमें से 10,000 शेयर्स ट्रेजरी स्टॉक की शक्ल में वापस खरीद लिए हैं तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स 90,000 रह जाएंगे. With the help of this example, let's see that how do we calculate the book value. There are two companies, suppose A and B, having equity of 100,000 and 200,000 and the number of shares outstanding as 5,000 and 8,000. So we divide the equity with the number of shares. So we get the value of A, company A's book value as 20 and company B's book value as 25. Now, if a share is selling in the market at a price much higher than its book value, then we can say that the share is overpriced. यानी ये अपनी असल कीमत से बहुत ज़्यादा पर बिक रहा है. And similarly, if a stock is selling at a price much less than its book value, then we can say that it is underpriced. और उसी हिसाब से हम ये फैसला कर सकते हैं कि इसको हमें ख़रीदना चाहिए या इसको हमें बेच देना चाहिए.
In some cases, this book value may not represent the true value of the share. यानी हमारे पास जो assets हैं, अगर वो undervalued है, तो हमारी book value भी कम होगी. The second ratio, which is again very important with reference to investors, is the price earning ratio. In its calculation, it is nothing but a ratio of the existing current market price and the earnings per share of the company. So when we divide the price of the company's share with its earning, we get a price earning ratio. But it actually shows that for a given amount of earnings, जैसा कि हमने कहा कि अर्निंग अमूमन साल में एक दफ़ा कैलकुलेट की जाती है, सो उस अर्निंग पर शेयर के अगेंस्ट इन्वेस्टर्स कितनी प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं. यानी अगर शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स एक गिवन अर्निंग पर शेयर के अगेंस्ट ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस अर्निंग के अंदर रिस्क का एलिमेंट कम है और वो ज़्यादा प्राइस देकर भी इसे हासिल करना चाहते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर मौजूद है वो ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ. द कंपनी इज़ लाइकली टू हैव मोर अर्निंग्स इन द फ्यूचर एंड दैट इज़ वाई द इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पे अ हायर प्राइस. जैसे जैसे प्राइस अर्निंग रेशो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम ये बात उससे अख्ज़ करते हैं कि कंपनी के शेयर्स के ऊपर, कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है. लेट्स सी दैट हाउ वी कैलकुलेट इट. इट्स सिंपली द प्राइस डिवाइडेड बाय द earnings. So if a company, let's say A has a price of 100 and EPS of 10, and company B has a price of 200 and the same earning of 10, so we can see that it is price earning ratio of company A is 10 and that of B is 20. और यही वो बात है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि it is very much possible that two companies having same earning per share may have a different price earning ratio. यानी इन दोनों कंपनीज का अगर हम मवाजना करें तो हमें ये पता चलता है कि कंपनी बी के अंदर लोगों का, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है. यानी वो 10 रुपए की अर्निंग्स को कमाने के लिए 200 रुपीस पे करने के लिए तैयार है. ईदर बिकॉज दे थिंक दैट दिस अर्निंग इज वेरी स्टेबल एंड देयर इज वेरी लिटिल रिस्क इन्वॉल्व इन दैट, or maybe because they see that there is a lot of potential and there is a lot of growth in this company's earnings and they would likely to earn more from this company. So price earning ratio जैसे fluctuate होती है, अगर ये कम होती जाए तो हम ये इससे अखज़ करते हैं कि कंपनी के अंदर जो रिस्क का एलिमेंट है वो इन्वेस्टर्स की निगाह में कम होता जा रहा है. और अगर प्राइस अर्निंग रेशो बढ़ती जाए तो हम उससे ये अखज़ करते हैं कि कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है. सो द प्राइस अर्निंग रेशो कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज द प्राइस इज अ डायनामिक phenomenon. दैट इज, price keeps on changing. So every day we may have got a different price earning ratio because the price of today may be different from the price of yesterday and the price of tomorrow may be different from the price of today.